this is the last topic. Okay. We already know about discount bonds. Okay. We said there is something which is called as the par value. So what is the par value of a bond? Actual face value of the bond. The face value or the maturity value, which is equal to 1000. So this is the par value. If a bond is issued below, or if a bond is being bought below the par value, then it is called as a discount bond. Okay. So for a discount bond, par value is more than the price of the bond, or price is less than par value. Okay. If it's the other way around, Premium. if you buy a bond for a price above the par value, it's called as a premium bond. So over here, price is more than the par. When both of them are equal, then it is called as a par bond, where price is equal to par. ये सारा clear है? Okay. अब आगे जाते हैं. So now, what actually decides the price of a bond? Price of a bond या value of a bond हमने क्या कहा था कि किस तरह decide किया? किस चीज को? Due to Risk free and risk premium. I over KD. I and KD. ठीक है? I and KD. Then this KD is discount rate, which is or capitalization rate or Cost of debt. required rate of return or cost of debt or Discount rate. बोल दिया है आगे कैपिटलाइजेशन भी बोल दिया और क्या था इक्विटी नाम में कुछ था वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कि इस्तेमाल होता है बॉन्ड के लिए Common stock. कॉमन स्टॉक के लिए इस्तेमाल होता है होती सेम चीज है लेकिन कॉमन स्टॉक के लिए इस्तेमाल होता है चलें मान लेते हैं कि चलें सही ठीक है एक और चीज yield to maturity भी ये होता है एग्जैक्टली रिक्वायर्ड रिटर्न ये होता है इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ये होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये सब कुछ याद है सारी टर्म्स याद है okay so this depends on There is risk which is risk free and risk free and risk premium ये भी हो गया ठीक है ये दो चीजों को डिसाइड कर रहा है अब सुने जरा गौर से अब अगर हमने कहा कि बॉन्ड की प्राइस या वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स व्हिच इज कूपन एंड केडी ओके एंड this KD is in fact your risk free rate consists of is dependent on risk free rate and risk premium. So if something happens to the risk free rate, then of course things will change. But normally risk free rate we say in economy, if the general interest rate is the same, so risk free rate आपका वही रहेगा. Okay. Risk premium for different investors would be different. Okay. Risk premium would be different for different investments which you are making for different investors because their required rate of return is different. उनका required rate of return अलग होता है तो इसका मतलब ये KD के लिए अलग हो सकता है. Okay. अच्छा अब अगर आप गौर से सुनें अब अगर आपका required of rate of return या आपका KD कुछ है और the organization what is this coupon? This coupon is the discount हमें मिलता है जो हर साल मिलता है. हाँ तो वो कौन दे रहा होता है? वो कौन दे रहा होता है? कंपनी जो कॉर्पोरेशन या बॉन्ड इशूअर ऑर्गेनाइजेशन आपको पे कर रहा है ठीक है. सो इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग यू लेट्स से 5% कूपन रेट एंड योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन 5%. So would you buy this bond at 1,000 rupees? No. The value will be down. The value will be down. Why? क्योंकि मेरे से ज़्यादा है more than 5%. required It's ज़्यादा रिक्वायरमेंट कूपन रेट उसका कम है. कूपन रेट उसका कम है तो फिर वो चाहता है कि वो कूपन रेट कम मिल रहा है तो वो ये जो बाकी पैसे हैं किस तरह पूरे करे डिस्काउंट या कब से डिस्काउंट में मिल जाएगा तो ये रेट पूरा कर पैसे पूरा कर. So for a discount bond the market required rate of return exceeds the coupon. सही है. और अगर ये सिचुएशन ऑपोजिट हो जाए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग यू अ हायर कूपन रेट आपको 10% दे रहा है and your required rate of return is only 7% or 6%. So then you will be expecting that the bond will be given to you or the bond will be issued or the bond will be sold in the market at a higher rate than par. So that means it will be a premium. And if it is equal और जब इक्वल हो जाएगा तो फिर इट विल बिकम अ पार. क्लियर हुई सारी डिस्कशन क्लियर है समझ आ गई सबकी. ओके
So now let's talk about bond price yield relationship. बॉन्ड की प्राइस और यील्ड का आपस में क्या रिलेशनशिप है? यील्ड टू मैच्योरिटी क्या चीज है? अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया. व्हाट इज वाइट हियर? Yield to maturity. Return on bond. रिटर्न ना. सो दिस इज एक्चुअली यील्ड. यही चीज है ना. अब मैं आपसे पूछ रहा था, आपने कहा इसको यील्ड भी बोलते हैं. सही बिल्कुल सही. So it's also yield to maturity. So now we know that the price of a bond is dependent on this KD. If KD goes up, the value of the bond goes down. goes down. Inverse relation. And if KD goes down, value will go up. Inverse relationship. सबको clear है? Yes. Okay. यहाँ पे जो अब ये KD normally किस तरह change होता है? When general interest rate in the economy changes, your KD will change. Yes. Because then the market's required rate of return will change. Why? Because they are looking at inflation as well. They are looking at the general interest rate. So if interest rate in the economy falls, the market required rate of return will also fall. सब rates fall करेंगे. Market में जितने भी rates होंगे, हर rate fall करेगा अगर general interest rate in the economy falls. Okay. So when interest rates rise, opposite will happen. Then the market required rates of return will rise. So when this will rise, Bond price will fall because it has an inverse relationship. So कोई बात clear है? Yes. Okay, it's very simple. So assume that the required rate of return on 15-year 10% coupon bond rises from 10 to 12%. 10 to 12%. So this is your 15-year bond. ठीक? ये इसका 10% coupon. ठीक है? Sorry, ये उसका market required rate of return. So if market required rate of return, उसने कहा कि 10 से 12 हो गया. 10 से 12 हो गया. 12 हो गया. Let's say it comes over here. ठीक? So if this rises, so you know the bond price will fall. इसका जो curve है वो कम हो जाएगा. negative. Negative. ठीक? Okay, let's find out if this moves to this point. So we can clearly see that the price will fall. सही है? Clear है? Yes. आसान है? Yes. समझ आ रही है? Yes. Okay. This will happen. Almost 800 तक आ जाए. सही? Okay. So therefore the bond price has fallen from 1000 to 864. अब अगर इसके opposite होता है, when interest rates in the economy fall, so KD would also fall and price would Go high. rise. Let's find out. Assume that the required rate of return on 15-year 10% coupon bond falls from 10 to 8%. Now it falls from 10 to 8%. So this actually falls from 10 to 8%. अब इस तरफ move हो जाता है. अगर इस तरफ move हो जाता है, so that means the price would Increase. rise, increase. ठीक है? Yes, sir. समझ आ रही है? Yes. Simple है? Yes. Okay. So this is what we said. Therefore the bond price has risen from 1000 to 1171. ये कह रहा almost 1171 चला जाए. ठीक? अब एक और चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं. अभी यही रिलेशनशिप है हमारे पास. ठीक है? केडी का और प्राइस का. अब इंट्रोड्यूस करते हैं बीच में मैच्योरिटी. ठीक है? कि अगर मैच्योरिटी चेंज हो तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? मतलब दो बॉन्ड्स हैं, एक मैच्योरिटी है, एक दूसरी मैच्योरिटी है. So what will happen to this relationship? The relationship stays the same, which means if KD will fall, bond price will rise. If KD rises, bond price would fall. Relationship यही रहेगा, extent में फर्क आएगा कि कितना ज्यादा कम होगा या कितना ज्यादा होगा. Okay. So the longer the bond maturity, यानी जिस बॉन्ड की मैच्योरिटी ज्यादा है, the longer the bond maturity, the greater the change in bond price. So the change in price would be more for a given change in the market required rate of return. अगर market required rate of return change करता है तो उसकी वजह से प्राइस चेंज होगा. लेकिन अगर मैच्योरिटी ज्यादा होगी तो ये चेंज ज्यादा होगा. अगर मैच्योरिटी कम होगी किसी बॉन्ड की तो उसमें ये चेंज कम होगा. Got the idea? Got the idea, class? Okay. Assume that the market required rate of return on both the 5 and 15-year 10% coupon bond falls from 10 to 8%. Now we have two bonds. 10 years maturity और दूसरा 5 years maturity, 15 years maturity. दो बॉन्ड है और 10% coupon bond falls from 10 to 8%. 10 to 8% चला जाता है.
हमने ये कहा था कि जब 10 to 8% जाएगा, 10 to 8% जाएगा, so the price is supposed to go up. 1000 से ऊपर चला गया था. अब दो बॉन्ड्स को चेक करते हैं, ठीक है? Let's check two bonds now. Let's check two bonds now. ये वाला, ये डिक्रीज वाला भी यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ आए कि दोनों बॉन्ड में क्या फर्क पड़ेगा. ओके, 10 to 8%, and we have over here at this point both are same. सही है? दोनों एक जगह पे पार. क्योंकि पार पे क्यों है? क्योंकि कूपन रेट भी 10% है और केडी भी 10%. दोनों 10%. दोनों जब इक्वल होंगे तो बॉन्ड की प्राइस और बॉन्ड का पार भी इक्वल होगा, सेम. ओके, अब यहाँ से 10 से 8 आ गया. जब 10 से 8 आ गया तो इसमें जो चेंज आया वो इतना है, 15 years. ये इतना चेंज है, which is 1002, ऑलमोस्ट उसने कहा था 1160 या 71. अब ये जो ग्रीन वाला है which is 5 year bond, इसमें चेंज सिर्फ ऑलमोस्ट हाफ चेंज है. वो देखें, ऑलमोस्ट हाफ चेंज. So this is what happens when we have longer or shorter maturity. Maturity ज्यादा होगी तो चेंज ज्यादा होगा, maturity कम होगी तो चेंज कम. Okay, so let's see the figures for this one. Okay, so the figure for this one is maturity. The 5-year bond price has risen from 1000 to 1080 for the 5-year bond. ठीक है? The 15-year bond price has risen from 1000 to 1170. ठीक? ये almost 1100 तक चला गया और वो almost 1200 तक चला गया. तो आधा फर्क आ गया. ठीक है? Got the idea? Yes. Okay. अब कूपन का फर्क देखते हैं कि कूपन का क्या फर्क होगा. इससे पहले हम लोगों ने मेच्योरिटी दी ना. ठीक, मेच्योरिटी कहाँ पे आ रही होती है? ठीक है? Now let's talk about coupon, which is this thing over here. If for a given change in the market required rate of return, हमें पता है market required rate of return changes, the price will change, and the relationship is still negative. So if market required rate of return goes up, the price of the bond will go down, and vice versa. Okay? So for a given change in the market required rate of return, the price of a bond will change by proportionally more. ठीक है? The lower the coupon rate. So if the coupon rate is low, the change would be more. So that means with coupon, the relationship is inverse. Inverse. Proportionally more, ठीक, the lower the coupon. Change is more if this is low. Tariq, getting the idea? मैं इसका रिलेशनशिप इसके साथ नहीं बता रहा. मैं ये कह रहा हूँ रिलेशनशिप इन दो का है, ये इसको चेंज करता है इस रिलेशनशिप. ठीक है? चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि इसको ऑपोजिट करता है, ये इसको ज्यादा या कम करता है. तो अगर हमने कहा कि ये भी चेंज करता है मेच्योरिटी, अगर मेच्योरिटी ज्यादा होगी तो ये चेंज ज्यादा होगा. अब आते हैं कूपन पे. कूपन ज्यादा होगा तो चेंज कम. ठीक है? समझ आ गई? समझ आई क्लास? Assume that the market required rate of return on two equally risky 15-year bonds is 10%. The coupon rate for bond H is 10% and bond L is 8%. अब अगर आप लोग दो बॉन्ड्स लें, 15 years bond, ठीक, and it is 10%, one is 10%, इसका coupon 10%, और the coupon rate for bond H is 10% and bond L is 8%. दोनों के कूपन रेट में फर्क हो तो जिसका कूपन रेट ज्यादा है उसकी प्राइस में जो चेंज आएगा वो कम आएगा. What is the rate of change in each of the bond prices if market required rates fall to 8%? So if market's required rate falls to 8%, we know if market's required rate it falls, ठीक है, falls, so the value of the bond will go up. But if we have two bonds and they have different coupon rates, one has a higher coupon rate and the other has a lower coupon rate. So for the one with the higher coupon rate, the change will be low. Okay? And the one with has a lower coupon rate, the change will be higher. अब समझ आ गया? ठीक? So the price of bonds H and L prior to the change in the market required rate of return is 1,840 respectively. ये आ गई उसकी प्राइस.
जब चेंज होता है तो प्राइस ऑफ बॉन्ड विल राइज फ्रॉम 1000 to 1171, the price for bond L will rise from 848 to 1000. So it rises faster. If you want to check, you can check it mathematically. This is the calculation. ठीक है? हम लोग पिछली क्लास में चेक कर चुके हैं. सही? Clear? Okay. So now let's go to YTM. YTM के बाद आते हैं. YTM हम लोगों ने क्या करना है कि स्केलिंग में. ठीक है? For bond. और जब बॉन्ड के लिए हम लोग कर रहे थे तो इट वाज अ वेरी लेंथी प्रोसेस. पहले हम लोगों ने उसको हिट एंड ट्रायल किया, फिर इंटरपोलेशन इस्तेमाल किया और फिर हम लोग YTM पे पहुंचे. ठीक है? If it is preferred stock with an infinite life, okay? Preferred stock का value of preferred stock is equal to dividend divided by cost of preferred stock KP. ठीक है? तो अगर यहाँ पे YTM आप फाइंड आउट कर रहे हैं, so this is actually YTM. Yes. ठीक? वहाँ पे हम फॉर्मूला में जब लिखते थे तो KD 2 जोड़ था ना, याद है? Yes. 2 जोड़ था. तो उसको ट्रांसपोजिशन थोड़ी सी मुश्किल है. अब अगर इसको मैं करूँ, तो इज इट प्रीटी सिंपल. इसको मल्टीप्लाई बाय KP कर देंगे. ये मल्टीप्लाई बाय KP उधर हो जाएगा. इसको डिवाइड बाय वैल्यू कर देंगे. So if I want to find out KP, which is equal to YTM, so YTM equals KP, and this is equal to dividend 1 divided by सिंपल. सही है? यही है? Yes. ठीक. और हम लोगों ने पहले ये कहा था कि this is actually equal to price, the current price. सही है क्लास? Yes. आसान है. Assume that the annual dividend on each share of preferred stock is 10. Each share of preferred stock is currently trading at 100. What is the yield on preferred stock? So we need to find out the yield on preferred stock. We've already seen the formula. So it is dividend divided by value. So what is the dividend in this case? 10. लेकिन ये कब का डिविडेंड है? एनुअल डिविडेंड है. ये अगले साल चेंज होगा, मुझे तो अगले साल के लिए चाहिए 31 के लिए. नहीं सर, ये तो परफेक्ट है. ये वो तो कॉमन स्टॉक है. कॉमन स्टॉक होता है. प्रेफर्ड स्टॉक में ये हमेशा सेम होता है. ओके. सो दिस इज 10 डिवाइड बाय 100. So this would be equal to 0.1, which is equal to 10%. Simple? Yes. सही है? Yes. Okay. So now let's find it for common stock. और common stock में भी कौन सा? Where we have a constant growth model. So do you remember the formula for constant growth model? D1 divided by Okay. Value of common stock equals D1 divided by cost of equity minus cost of equity अभी आ जाएगा. और यहाँ पे growth rate है which is common, which is constant, so KE minus. सही है? Yes sir. अब अगर इसको ट्रांसपोज करें, इसको चेंज करें, तो हमारे पास क्या आएगा? KE minus G को उठाकर साइड पे इस साइड पे ले आएंगे. So this will become KE minus G equals, और इसको उठाकर इधर ले आएंगे. So D1 by value divided by value of the common stock. market price ठीक. अब G को इधर ही रहने देना है और KE को उठाकर इधर ले जाना. प्लस हो जाएगा. ठीक है? तो KE को क्या कर देंगे? जी वहां पे G को, अच्छा सॉरी, G को क्या करेंगे? G को उधर लेके जाना है, KE को इधर छोड़ना है. G को उधर लेके जाएंगे तो G उधर प्लस हो जाएगा. Okay. So this will become plus KE equals D1 divided by value और प्लस G. ये से अलग है, इसका मतलब ये इस तरह है. yes ठीक है? Clear? Clear class? yes sir. सही है? Yes. Okay. So let's find it out. Assume that the expected dividend D1 on each share of common stock is 3. Expected dividend. Expected dividend means It will change. dividend Confirm the expected. expected. तो expected क्या मतलब है? Future. Expectations for the future ना. अगर current होता तो confirm क्या था कि current dividend ये है. ठीक है? So this is actually D1. One. अगर क्वेश्चन में D not given होता तो फिर तो फिर वो फाइंड करते D1 फाइनल होता है. फिर फाइंड करते. कैसे फाइंड करते? 1 plus growth rate. D not multiplied by 1 plus D1 equals 1 plus D D naught into 1 plus G. इस तरह पे सही है. ख्याल रखिएगा एग्जाम. ठीक है? कि D1 गिवन है, कि D नॉट गिवन है, कि D2 गिवन है. अगर D2 गिवन होगा तो फिर एक बैग नहीं. Discount. डिवाइड करें. सही है? D2 पे डिवाइड. ठीक. सही है. आंखें और दिमाग एग्जाम में खोले. बिल्कुल अगर बंद हो गए तो बस.
Okay, so let's find out class. Let's find out. So this is what we said the formula looks like now. Formula इस तरह है? Yes. अच्छा आप देखिए. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि expected dividend कितना है? 3 3 expected dividend हो गया और value या current price कितनी है? 30 और फिर वो कह रहा है कि इसको growth rate के साथ ऐड कर दें. Growth rate कितना है? 5%. Okay, so 3 divided by 30 will be 0.1 plus 5%. 5% is equal to 0.105 0.05. 5. तो इसको जब ऐड कर देंगे so it would be 0.105 105. 0.15 सही है सर, सही है आपने सही लिखा 15 नहीं है 105 सर 10. 0.1 plus 0.05 तो 0.105 0.1 0.05 0.15. नहीं है सर. सर आपका सही हाँ ना नहीं मानते सर. हाँ सर सही है सर मैं नहीं मानता. ये वाला मुझे पता चल गया पेपर में किसी नहीं पूछना सही है. तो मुझे पता है पेपर में आप ये गलतियां करेंगे और फिर आप कहेंगे पेपर खोटे रख रहा हूँ. पेपर खोटे रख रहा है नवी सर जी. Paper grammar you make silly mistakes. This is a silly mistake. Why? Because when you do it on the calculator, so you forgot to put brackets. That's why. सर लेकिन अगर हम 0.1 से के साथ प्लस करते हैं 5% हाँ 0.05 नहीं लिखते तो फिर 105 आ रहा है 0.105 नहीं आएगा. आ रहा है नहीं आएगा. देखिए 0.1 प्लस 5% plus 5%. तो 105 आ रहा है 0.1 plus 5 कितना हो गया? 0.1 plus 5 सही देखा ना सर इधर 5.1 हो गया 5.1 डिवाइड बाय 5.1 हो गया. तो 5.1 divided by 100 कितना होगा? 5.1 डिवाइड बाय 100 नहीं ये तो कुछ और ही नहीं है. वो तो पता नहीं है क्या कर रहा है. But most probably this is what it's doing without bracket. पहले कन्वर्ट करना है Okay, clear class? Clear? 15%, 115 which is equal to 15%. Okay, so we are done. Emma.